देखिए। हम्म Good afternoon, friends. I have one applied mechanics assignment .pdf. That document I have submitted on a Telegram. Please look into that. This is the complete assignment booklet of all chapters. So in that already we can say questions are available. So extra questions I don't require to give. For that purpose, I have given here all these things. Uh, please try to open this PDF. I have given in PDF format. All the questions, if you see the previous year, they have asked this question. These questions we have segregated as per chapter, and we have made a booklet. And this booklet you should have, because henceforth whatever problem which I am going to solve, that all problem are going out of that. This all problems are from this booklet. जो भी मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ वो सभी प्रॉब्लम इस बुकलेट में से ही होंगे, इसलिए हर एक के पास ये बुकलेट होना बहुत जरूरी है. Okay, so can you open this? Anyone is having any issue related to opening? ओपन नहीं हो रहा है ऐसा किसी कोई इशू? रोहन? हाँ ओपन होते सर. होते हैं ना. ओके ओके. So you can go directly on the page number 73. So we'll solve some problems on 73 page, from page number 73. 73 पेज नंबर पे जाओ आप, उसमें से 1.2.5 क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा. 75 पेज नंबर. One point 2.5. Open the 1.2.5. This question they have asked for 12 marks, but actually in our exam they are not going to ask for 12 marks. If it is physically it is going to happen, it will be asked for 7 marks. And if it is not physically happen, so such types of any question will not be observed in the exam also. Open the file size मोठे असल्यामुळे problem आहे थोडा. So determine the question is a non-concurrent coplanar forces. So already I have mentioned what is mean by concurrent and what is mean by coplanar. Non-concurrent means जो फोर्सेस इकट्ठा नहीं होते, एक जगह पे इकट्ठा नहीं होते, उसको नॉन कॉन्करेंट बोलते हैं. और जो फोर्सेस एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं उसको कॉन्करेंट बोलते हैं, अपोजिट. कोप्लेनर मीन्स इन वन प्लेन, एक ही प्लेन पे सभी फोर्सेस है, इसलिए उसका नेम दे हैव गिवन कोप्लेनर. Force system is acting on the lamina as shown in figure 1. Page number 73, 1.2.5. Page number 73, 1.2.5. Determine magnitude of force P such that the resultant passes through point A. Resultant is a passes through a point A, hence find the resultant. Hence find the resultant also. Means they have said that the resultant is a passes through a point A. Resultant passes through a point A. Find the resultant. हमको P force भी इधर निकालना है.
Have you understood this question? सर आता ओपन केली पीडीएफ. कोणता क्वेश्चन सांगितला तुम्ही? 73 page number 1.2.5. Everyone has seen this question number. आपने पढ़ लिया क्या? देख लीजिएगा. So I have cleared this thing also. A non-concurrent coplanar force system is acting on the lamina as shown in figure. Determine magnitude of force P such that, means here unknown दो है और रिजल्टेंट भी हमको पता नहीं है और P फोर्स भी हमको पता नहीं है. रिजल्टेंट भी हमको पता नहीं है और P फोर्स भी हमको पता नहीं है. So how to find out the P value first and then how to find out the resultant, because resultant हमें find out करना है तो हमको P value पता ही होनी चाहिए. Have you understood or not? Question is in this way. $260 Newton. $240 Newton. P 200 Newton. A point is here. And they have given distances. It is a 0.5, 2 meter. This horizontal distance is a 2 meter. 1 meter and 0.3 meter. How to find out the angle of this? आप में से कौन बता सकता है कि ये एंगल कैसे फाइंड आउट करने का? दिस इज अ 1 एंड दिस इज अ 3. 1/3 ratio is there. So can anybody tell this कि how to find out the angle? 240 का एंगल कितना है? आपने शायद स्लोप के रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे कि सपोज दैट दिस इज अ थीटा, दिस थीटा एंड दिस थीटा इज रिमेन सेम बिकॉज इट इज मेड एंगल विथ हॉरिजॉन्टल. ये हमको थीटा फाइंड आउट करना है. रिमेंबर दिस. सो ट्रिग्नोमेट्री में से कौन सी टर्म यूज करनी पड़ेगी? साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा. टेन थीटा. आर यू अंडरस्टैंडिंग नॉट? आपको वर्टिकल हाइट 1 दिया है, हॉरिजॉन्टल 3 दिया है. सो कैन आई से दैट tan theta is equal to 1/3. So can you find out theta now? So they have given slope here. So find out theta and tell me. 30. 30. हाँ. Anybody saying any other answer here? Tan theta is equal to 1/3. 1 is here, 3 is here. So tan theta समोरची बाजू भागिले लगतची बाजू.
So tan theta is equal to 1/3. So theta is how much? किती आहे theta? So what is the value of theta? Now who is going to tell that what is the value of theta? Ohms of the day. आवाज क्लियर नाही दुसऱ्याला विचारतो. धीरज जगताप व्हॅल्यू सांगा. व्हॅल्यू सर थीटा 15 येते. 15 ना. ओके. हा. So theta is equal to 15. So this angle is 15 now. So I will, instead of writing this 1/3, I will write directly it is a 15 degree. Clear? Clear. Now still this force is horizontal, this force is vertical. ये इस force का हमने angle find out किया है. इस force का angle कैसे find out करेंगे? इस फोर्स का एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? बिकॉज दिस इज नॉट परपेंडिकुलर. हमको पता नहीं है वो परपेंडिकुलर है कि नहीं है. सो इफ दे हैव गिवन परपेंडिकुलर, आई हैव डिडक्टेड 90 - 15, तो ये आ जाता. लेकिन ये परपेंडिकुलर है कि नहीं हमको पता नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे? दिस फोर्स इज इन लाइन विद दिस. ये लाइन, ये जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल को कितना एंगल करती है, उतना ही एंगल इस फोर्स का होगा. ये जो एंगल है वही एंगल इस 250 न्यूटन का, 260 न्यूटन का होगा. तो इसलिए हम ये एंगल फाइंड आउट करते हैं. तो हाउ टू फाइंड आउट दिस एंगल? यू नो दैट दिस इज अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दे हैव गिवन 0.5. वर्टिकल डिस्टेंस दे हैव गिवन इट इज अ 0.3. am I right? So this and this angle will be remain same. ये एंगल और ये एंगल सेम रहेगा. So what will be the formula? So tan theta, again here you are required to use tan theta is equal to 0.3 divided by 0.5. This is a 0.5. See here, this is a 0.5 means this is a 0.5 and 0.3 is here. So how much will be the theta here now? Again calculate. Tan theta is equal to 0.3 divided by 0.5. 30.96. 30.96. So 30.96 na? हाँ. Correct. Okay, 30.96. Clear? So we have got this angle also. 260 Newton का भी एंगल मेरे को मिल गया. Clear? Now from my side, how to find out angle? I have cleared. One angle is a 15 degree due to a slope 1/3, and second one, ये जो 260 न्यूटन है ये इनलाइन इसका है, तो ये लाइन जितना एंगल करेगी उतना ही ये फोर्स एंगल करेगा. इसलिए मैंने क्या किया कि ये एंगल फाइंड आउट करते वक्त ये ट्रायंगल बना दिया मैंने. दिस ट्रायंगल आई हैव मेड. दिस डिस्टेंस यू कैन चेक इट इज a 0.3. This distance you can check it is a 0.5. So in this way we have found out the angle of 260 Newton. Clear? Now you know that without P, without a value of P, we can't find out resultant. लेकिन एक बात आप उधर देख लीजिएगा, they have said that a resultant is passes through point A. The resultant, so I will draw this resultant here. उसका बहुत ही मीनिंग है, इसलिए मैंने ये प्रॉब्लम चूज किया है. So the resultant is passes through point A. They have not showed, they have not mentioned at all the resultant is horizontal, vertical or inclined. They have not at all mentioned this thing. आपको अभी किधर भी ऐसा दिख नहीं रहा है कि उन्होंने, और वो क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि ये जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट ये से पास हो रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है या इंक्लाइंड है, ये नहीं बताया है. क्लियर दिस? और इसका डायरेक्शन भी हमको पता नहीं. इज इट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसा नहीं मेंशन किया. हाँ
ते टॅन थिटा Sir? किती 30.96. खरं मी केलं सर ते तर 33 येते ना. किती येते? हा सर 33. 33 येते. 33 हा So take it 30, 33 you can take it. Because I also don't know. 33, please check it, cross check this. नाही सर 30च येते. हॅलो सर, हा, ते कंसात घेतलं ना ते 0.3/0.5 तर वेगळी व्हॅल्यू येते आणि विदाउट ब्रॅकेट घेतलं तर वेगळी नाही नाही येते. तुम्ही काय करा माहिती आहे का, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इन द ब्रॅकेट 0.3 डिवायडेड बाय 0.5 करा बरं. हा ब्रॅकेट मध्ये हा, हा घेतली. हा ब्रॅकेट मध्ये तीच 30 त्यावेळेस येते त्यावेळेस ब्रॅकेट किती मध्ये. येते? 30 येते ब्रॅकेट मध्ये. 30. एक मिनिट मी विचारतो, या कोणाला तरी एक विचारतो. मोनाली तुम्ही मला सांगा, हा तुम्ही काय केलंय, tan थीटा इज इक्वल टू 0.3 डिवायडेड बाय 0.5 त्याची व्हॅल्यू किती आली? एक मिनिट Point- सर. हा 0.3 डिवायडेड बाय 0.5 ची व्हॅल्यू किती आली सांगा. ब्रॅकेट मध्ये direct आहे घेतलं असं केलं 30.96. ब्रॅकेट घ्यायची गरज नाही ना, मी मस्त 0.3 डिवायडेड बाय 0.5 म्हणतोय मी. tan इनवर्स अजून करा असं म्हणलेलं नाही मी. 0.6 नाही 0.3 डिवायडेड बाय 0.5 किती आलं? 0.6 0.6 ना. हा आता tan इनवर्स करा बरं. आता tan इनवर्स करा. आन्सर tan इनवर्स 30.96 30.96. 30.96 येते हो. Okay, 30.96 is the correct answer. Okay. Now you just tell me that if resultant is a passing through point A, if the resultant is a passing through a point A, what is the meaning of this? So can I say that if I take the movement at point A, मैंने movement at the point A लिया, movement at the point A जब लिया, so and I have not considered at all other things because resultant ने सभी की जिम्मेदारी ली है. Are you understanding or not? Suppose that movement at point A लिया होता तो 200 into perpendicular distance मैंने लिया होता, then 300 into sorry इधर कितना है P into perpendicular distance मैंने consider किया होता. लेकिन resultant has taken the responsibility of force P 260, 240 and 200 Newton. तो हमको क्या करना पड़ेगा कि summation of m is equal to I will put in a different way. I will put it in this way, R into D. Movement at point A और at movement किसी का भी आप movement ले लीजिएगा. ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसी स्टेटमेंट से ही हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. मूवमेंट मतलब क्या, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. एम आई राइट? मैंने क्या किया होता, मूवमेंट मेरे को जब निकालना होता तो मैंने 200 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया होता, 240 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया होता, 260 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया होता एंड P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया होता. लेकिन फेरिग्नस केम फॉरवर्ड. फेरिग्नस इज अ साइंटिस्ट. उन्होंने क्या किया और उन्होंने प्रूव भी किया कि बोला कि उन्होंने ये बोला कि जब ये इतने फोर्सेस है, इतने फोर्सेस का रिजल्टेंट आपने फाइंड आउट कर लिया होगा तो आप ये क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं. सो डायरेक्टली यू टेक रिजल्टेंट एंड हिज परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो जब भी हम मूवमेंट फाइंड आउट करते थे तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंसीडर करते थे हर एक फोर्स का, लेकिन फोर्स का कॉम्बिनेशन रिजल्टेंट है. तो रिजल्टेंट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हम फाइंड आउट करेंगे तो हमको मूवमेंट मिल जाता है. समझ में आ रहा है कि नहीं? और आई विल पुट इन अनदर वे. समेशन ऑफ m इज इक्वल टू f1 इंटू d1 प्लस f2 इंटू d2 प्लस f3 इंटू d3 प्लस डैश डैश डैश. रिजल्ट फेरिग्नस ने क्या बोला कि आप इस फोर्सेस का रिजल्टेंट R है, ऐसा सपोज इस फोर्सेस का रिजल्टेंट R होगा तो आपको ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है.
ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यू टेक रिजल्टेंट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, रिजल्टेंट को ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो, आपको मूवमेंट मिल जाएगा। आप क्या करो, समझ में आ रहा है what I am saying? Have you understood or not? Yes. Okay, now in this case, if I will consider the movement at point A, if I will consider the movement at point A, can I say that resultant into perpendicular distance is a 0? Can I say that the resultant R into perpendicular distance, ये पे ही resultant है, उन्होंने बोला है कि resultant is passes through point A. If R is a passes through point A, and if I take the movement at point A, so resultant into perpendicular distance itself is a 0. Now I can say that summation of MA, movement at point A, is equal to 0. Clear? Understood or not? Okay. Now I know that here the one force is unknown, P force is unknown here. So I have to take the movement. Now मेरे को ये क्या करना पड़ेगा कि ये मेरे को पक्का पता चल गया, ये आपको पता नहीं होता तो आपने क्या किया होता कि summation of M at point A is equal to P into perpendicular distance 1 meter. So P into 1. Clear? Force into perpendicular distance 1 meter. Then 200 Newton into perpendicular distance 2 meter. Clockwise or anti-clockwise? Check it. It is a clockwise. You can check it. P force is applied here, so it is going to produce clockwise movement, so it is positive. And if it is a 200 Newton, it is an anti-clockwise movement, so it is minus 200 into perpendicular distance 2. Actually, what I am doing, again I am repeating this, I know now the value of summation of MA is a 0. I know value of summation of MA is equal to 0. You can check it. इधर मैंने अभी प्रूव कर लिया है, तो मेरे पास मूवमेंट फाइंड आउट करने के दो फॉर्मूलेज है. रिमेंबर दिस, one formula is this and second formula is this. Clear? Now through this formula we are finding out the value of summation of M, and this value we are going to keep here, and afterwards unknown P force we are finding out from the above formula. समझते ना? आपको मैं और एक बार बताता हूं, मेरे पास फॉर्मूला मूवमेंट फाइंड आउट करने के दो फॉर्मूला हैं. So previously F1 into D1 and summation of M is equal to R into D. By second formula, I will find out the value of summation of M, and after finding out this value, I will keep here and I will find out the unknown. Clear? So same process we are required to do here. Now already I know that, so I will write here. Okay. So two forces I have completed. P into perpendicular distance 1, 200 into perpendicular distance is a 2 meter. Now next force you resolve this force here. ये force हमने इधर resolve करेंगे अभी. So 260 ये force क्या आएगा? 260 cos 30.96 and ये 260 sin 30.96. Now I know that this force, if I will consider here, it is going to pass through point A. हम movement A पे ले रहे हैं ना. So horizontal force is passes through point A, so it is not having a perpendicular distance. 260 cos 30.96 को perpendicular distance नहीं होगा. Have you understood or not? Here again I am repeating this. ये रिजल्टेंट अभी रिमूव करता हूं मैं इसको. ये फोर्स इधर है, मैंने इसको रिजॉल्व किया, सपोज दैट मैंने ऐसा रिजॉल्व किया इसको.
और मूवमेंट किधर फाइंड आउट करना है, ये पे फाइंड आउट करना है मेरे को। तो मैं क्या करूंगा, ये से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा, आवर रेगुलर प्रोसेस। Now can I say that this 260 cos 30.96 is a passes through a point A? Yes. Yes, sir. So there will not be a perpendicular distance. So movement produced by 260 30.96 is a 0. Now you can take a next force 260 sin 36 30.96 ये force 260 sin 30.96 and it is a vertical. You apply the force, it is going to produce clockwise movement. So I will write here plus 260 cos 30.96 into perpendicular distance is how much? You can check, it is a 0.5. It is 0.5. Clear? Okay. Now similar way we will do for this also. Similar way we will do for this also. Now these 240 Newton. हॅलो सर, थिटा बोला. 18.43 येत आहे तिथं. हा नाही सर, वाटत. 15च्या 15 नाही आहेत सर. 18.43. 15 नाही येत, 18 येत. ओके ओके. 15 येत नाही, 18 येते बरोबर. हा. ओके ओके. Now this force I will resolve here. इधर मैं resolve करूंगा. So it is 240 cos 18 and this is 240 sin 18. Clear? Now this force, if I transmit at the point A, he is not having any perpendicular distance. This force is not having any perpendicular distance. So the moment produced by this force is a 0. Clear? Now, obviously, 240 cos 18 is going to produce a clockwise movement. Sorry, anti-clockwise or clockwise, you can check it. I will put the pen here and I will apply the force. Now, this is an anti-clockwise movement. Here, if I apply the force in this direction, it is anti-clockwise movement. So, minus 240 cos 18. Sorry, here I have made mistake. It is a sin. Vertical force into perpendicular distance. 260 sin 30.96 into perpendicular distance is a 0.5 and 240 cos 18 into perpendicular distance 0.3. Clear? Any doubt related to this resolution? Movement के बारे में कुछ इसका कुछ प्रॉब्लम है क्या, मेरे को बताओ. सर 260 न्यूटन आहे ना, त्याची डायरेक्शन कशी ठरवली तेवढं सांगा की. हे बघा 260 न्यूटन फोर्स कसा आहे सांगा, ह्या दिशेने. हा. आणि व्हॉट इज आवर टेंडन्सी, दोन ॲरो काढा, पण ते ॲरो कसे असले पाहिजे, ज्या दिशेने हे ॲरो आहेत त्याच दिशेने हे ॲरो येणार ना. हा, ती सर ह्याची डायरेक्शन साइन 30 ची क्लॉकवाईज का अँटी क्लॉकवाईज ती. क्लॉकवाइज. बरं ओके. पेन इथं ठेवला मैंने पेन इधर रख दिया. हाँ. अभी ये फोर्स वर्टिकल है. हाँ. तो उसको मैंने फोर्स अप्लाई किया, अपवर्ड फोर्स. वर्टिकल है ना. इट इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. चेक कर लीजिए ना. क्लॉकवाइज. सो दैट आई हैव केप्ट 260 प्लस. ओके सर. ओके. एनी अनदर क्वेश्चन? Now you can check it. Summation of MA. In this case, it is a 0. You can check it here. So instead of this, can I put here 0? Now in a throughout equation, the only one unknown is there, and that is a P. Only one unknown is there, and that is a P. So can you find out P value now? Yes. Okay, now try to find out the value of P now, because they have asked this value, so that we have to find out the P value first and then we have to find out the resultant. Clear? Now try to solve this problem now. Everyone should require to solve this problem.
Find out the value of P. It is very simple. 200 into 2. 260 sine 30.96 into 2.5 minus 240 cos 18 into 0.3. So value of P is, I think so, Chetan has written minus 400. Is it correct? 401.6. 0? Sir, 400, 401. 401.6. 401. Okay, okay. Minus 401, no? नाही sir, positive. पॉझिटिव्ह. पॉझिटिव्ह येतं का? Positive Okay, 400. 401. पण सगळ्यांच्या व्हॅल्यू 401 येते ना? हा sir. हा सर. Okay. So 400 or 401. So the value of P is 401. Value of P is 401 Newton. Please cross check this. Now सर माझी 452 आली. 452 नाही येत, एवढे येत नाही. दुसरं कोणाचे आले का 452? याच्या व्यतिरिक्त कोणाची व्हॅल्यू आली असेल तर सांगा मला. 452 वगैरे जरा थोडं क्रॉस चेक करावं. Okay. Now those who have found out the answer, please find out the resultant now. Find out, now we know the value of P. We can easily do summation of f of x, and we also easily we can complete summation of f of y. And what is the resultant? Resultant is the root of summation of f of x square plus summation of f of y square. Clear? Now do this calculation now. Find out the resultant, summation of f of x, summation of f of y, and then afterwards find out the resultant. The value of P is a 401. It is correct value. Now do a summation of f of x is equal to 0. Summation of f of x. Find out summation of f of x. Find out summation of f of y, and find out the resultant. Because they are asked with just a resultant. Huh? Summation of f of x square plus the summation of f of y square. And doing this resolution is a simple for you now. Already you know the angle. So in a summation of f of x, minus 240 cos 18 and minus 401 plus 260 cos 30.96. These three forces are going to it will means these three forces are horizontal. Then 260 sin 30.96 is a vertical. So summation of f of y is equal to 260 sin 30.9, 240 sin 18, and 200. Just do the calculation. You are going to get value of summation of f of x. You are going to get the value of summation of f of y, and afterwards find out the resultant. So what is the value of summation of f of x? Minus 5.29. Minus 5.29. Please check it.
Find out the summation of f of y. हेलो, किसी और ऐसा कोई है कि इधर की जिसने कैलकुलेटर ही नहीं लिया है? 400 की ओके, डोंट डू दिस थिंग। रिमेंबर दैट कैलकुलेटर आपको लेना ही पड़ेगा एग्जाम में, वो बहुत जरूरी है। इधर आप लाखों रुपए खर्च करेंगे और 500 रुपए की तरफ देखेंगे। सो टेक अ कैलकुलेटर एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि सभी ने इसी वक्त तक आपने सभी ने आंसर देने चाहिए थे। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत कम स्टूडेंट्स आंसर देते हैं। तो इससे मेरे को लग रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने कैलकुलेटर ही नहीं लिया है। ओके, नाउ टेल मी समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई। सर समेशन ऑफ f of x मायनस 406 येते. -406 हा 0.29. चेक करा किती जणांचं -406 येते. येस सर. 407 येते ना? हा. Yes, sir. Okay, -406. Now find out summation of f of y. Find out summation of f of y. Four zero 7.91. 407. I'll write just 407. Point के बाद जो वैल्यू है मैं नहीं लिखूंगा. So you can consider just a 407 and find out the resultant now. Now find out the resultant. So resultant is going to come, I think so it is a 575, no? Five 574. Okay, 574 or 575, very small difference. So 575, this is the value of a resultant. So we solve this numerical. In exam they are going to ask such types of question for 7 marks, one question for 7 marks. So remember this, the questions are quite challenging for us. Initially it was a challenging, but afterwards definitely 1-2 step if you understood, then this type of problems can be solved within a 2 to 3 minutes. ये सभी प्रॉब्लम जो ये 7 मार्क का क्वेश्चन है, वो 7 मार्क का क्वेश्चन 2 मिनट में भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इतना सिंपल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के प्रॉब्लम रहते हैं, लेकिन द बेसिक थिंग्स यू मस्ट नो. So it is the value of p is equal to 401. Answer is also correct. In our booklet, also we have given the answer. You can check it below. We have mentioned answer p is equal to 401 and r is equal to 576. They have written. In our case it is going to come 576. So plus minus 2 difference is always considerable. They are not going to check as it is values because there is some error in calculator also. So that we have required to consider plus minus difference. 2 का difference हमको consider करके चलना पड़ता है. So in this case 274 is also a correct answer. 278 is also a correct answer from my opinion. Up to 274 to 278, whatever the value is going to come, that is the correct answer. हॅलो सर. हाँ सर थिटा काढायची आहे का?
थिटा काय गरज नाही, थिटा त्यांनी कुठे विचारलं आपल्याला, Okay. त्याने फक्त रिझल्टंट विचारलंय. डिटरमाइन मॅग्निट्यूड ऑफ फोर्स P such that resultant passes through point A. Hence find the resultant. Find the resultant also. So they have not asked the theta. Okay. Okay, sir. Okay. Now we'll take another one numerical. Open page number 75. Open page number 75. Problem number 1.2.9. 1.2.9. Last question. Now problem is very straightforward. Determine the resultant of three forces acting shown in figure 1. Resultant पहले हमको find out करना है, which is the simplest task. You can check it, but simplest not. 30 kilonewton का जो angle है, वो find out करना बहुत जरूरी है. They have given angle with a surface, but with not horizontal. उन्होंने horizontal से angle नहीं दिया है हमको. Are you understanding or not? So, how much is the angle of 30 kilonewton with a horizontal line? ये हमको find out किया, तो resultant find out करना सबसे simple बात है. So, who is going to tell that now? What is the angle of 30 kilonewton with a horizontal? कौन बताएगा? 30 किलो 60. कसं काय 60 येईल सांगा मला. व्युत्क्रम जर म्हणले तर 60 ला अपोजिट झाले. अल्टरनेट अँगल्स. हा, अल्टरनेट अँगलच घे मग, करा ना तुम्ही तिथं. सर क्वेश्चन किती नंबर हो? क्वेश्चन नंबर 1.2.9. क्वेश्चन नंबर 1.2.9. मेरे को प्रॉब्लम इस जगह है खाली. दो अदर फोर्सेस आर कंप्लीटली वर्टिकल. एक फोर्स तो कंप्लीटली वर्टिकल है और दूसरा फोर्स हॉरिजॉन्टल है. एंड उन्होंने क्या बताया है कि दिस एंगल इज 90 डिग्री. परपेंडिकुलर साइन दिया है ना उन्होंने. So this angle is a 90 degree. Now you tell me that this angle is a 60 degree. Then how much is the angle made by this with a 30 horizontal? degree, sir. 30. हाँ, 30 degree. So it is a 30 kilonewton. 30 kilonewton force. Now as per the alternate angle formula or the theorem, this angle and this angle is a 60 degree. This angle and this angle remain same. Now you know that if this is a 60 degree and this is a 90 degree, so how much will be left now? This 30 degree. Clear? So can you find out this now, the component? See here, this will be the 30 minus 30 cos 30. Am I right? And this is minus 30 sin 30. All the angle of arrows are away. All the direction of arrows, all the directions of an arrows are away or in the same direction. So resolution I did. So further part I don't require to tell also. So you are required to do the summation of f of x and summation of f of y. Do this now. Complete this task. Do summation of f of x and summation of f of y. Hardly 3 forces are there. 3 forces है. एक 50 kilonewton completely horizontal, 120 kilonewton completely vertical. 30 kilonewton, one component is horizontal, one component is vertical.
और उन्होंने क्या पूछा है, रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए कहा है, एंड लोकेट इट्स इंटरसेक्शन विथ द बेस ए बी. फॉर सेफ डिजाइन दिस इंटरसेक्शन शुड बी विद इन द मिडल ऑफ थर्ड. इज इट अ सेफ डिजाइन, ऐसा पूछा है. सो विल डू दिस आफ्टरवर्ड्स, बट जस्ट यू कैन फाइंड आउट द रिजल्टेंट नाउ. एकशे 67.1. 167 रिझल्टंट नाही हा. सर 137 येते. 137 यायला पाहिजे. 137 हा 137 येते सर. 137. 137 should require to come. 137.1. हाँ correct. Okay, now everyone has received the value of 137.11 kilonewton as a resultant value. Now find out theta. Theta should also require to come 79.91. Answers are given there. Answers are there in the booklet. Now what they have asked, you can check it. आपको उन्होंने पूछा है कि रिजल्टेंट किस लोकेशन से जा रहा है. रिजल्टेंट किस लोकेशन से जा रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज मेनी टाइम्स स्टूडेंट्स आर नॉट, दे आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस मीनिंग ऑफ दिस. अभी मैं सभी फोर्सेस रिमूव कर लूंगा, क्योंकि रिजल्टेंट फाइंड आउट होने के बाद मेरे को फोर्सेस की जरूरत नहीं है दूसरे, क्योंकि वन इज अ सफिशिएंट हियर. ओके, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है क्या नेगेटिव? पॉझिटिव्ह. Positive. Okay. So summation of f of x is positive. Summation of f of y? निगेटिव्ह. Negative. निगेटिव्ह. Okay. So the resultant arrow, I know that. The resultant is moving in this way. I know that. So I know that this resultant may going to pass in this way, somewhere from this. Am I right or wrong? इसका एक हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा, इधर होगा कुछ, तो शायद इसका मैंने रिजोल्यूशन किया होता तो एक इधर है एंड समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इधर है, इसका रिजोल्यूशन किया तो दिस इज द रिजल्टेंट. सभी फोर्सेस मैंने रिमूव कर दिए एंड मैंने खाली रिजल्टेंट ही दिखाया. रिजल्टेंट का डायरेक्शन मेरे को पता है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई. ये लाइन जो है ना, इसको मैं किधर भी, इधर भी दिखा सकता हूँ समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, एंड इधर भी मैंने समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई दिखा सकता हूँ. इस लोकेशन पे आप किधर भी दिखा सकते हैं. क्लियर? नाउ दे हैव सेड दैट कि फाइंड आउट द रिजल्टेंट का जो लोकेशन है ना, रिजल्टेंट किधर से पास हो रहा है ये मेरे को दिखाओ, ऐसा उन्होंने बोला है. रिजल्टेंट कहां से पास हो रहा है ये पूछा है. नाउ आई नो दैट कि दिस resultant is having two components, so summation of f of y and another one is a summation of f of x. Now you can check it from B point. If I take the movement at a point B, so can I say that summation of f of y, summation of f of y into perpendicular distance is x.
I will say that this is a x. Okay, or I will put in this way, capital X, summation of f of y into x, and x is nothing but this distance. In this case, summation of f of x into perpendicular distance is 0. I can assume summation of f of y anywhere. आप किधर भी इसको assume करो, इस लाइन पे किधर भी उसको assume करो. Are you understanding? तो ये x खाली चेंज होता जाएगा. Clear? Resultant का. So can I say that x is equal to summation of f of y divided by summation of m? Can I say that? Are you understanding or not? Can I say that x is equal to summation of f of y divided by summation of m? Clear? So similarly, I can also find out the summation of we have required to mean मैंने ये x find out करने के बाद मेरे को पक्का पता चला कि रिजल्टेंट इस बी पॉइंट से इस लोकेशन से फॉर एग्जांपल 2 मीटर आ गया तो 2 मीटर से पास हो रहा है, लेकिन वर्टिकल कितने डिस्टेंस से पास हो रहा है वो मेरे को पता नहीं है. राइट? वर्टिकल कितना डिस्टेंस है तो वो फाइंड आउट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा कि सपोज दैट इफ आई रिजॉल्व द समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंस्टेड ऑफ रिजॉल्विंग हियर, इफ आई रिजॉल्व द समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स हियर, so can I say that the perpendicular distance will, this perpendicular distance will be a y? So in this case you can check it, summation of m at point B is equal to summation of f of x into y. So y is equal to summation of f of x divided by summation of m at point B. So these are the two formulas by which we can easily find out the location of resultant. Are you understanding or not? If anybody is not understood, again I am repeating this. आपको मैंने बहुत बार बताया है कि रिजल्टेंट जो होगा और फोर्स, कोई भी फोर्स होगा, उसकी लाइन ऑफ एक्शन पे हम किधर भी दिखा सकते हैं. इसकी लाइन ऑफ एक्शन पे मैं किधर भी दिखा सकता हूं. सपोज दैट इफ आई रिजॉल्व मूवमेंट, इधर मैंने इसको रिजॉल्व क्या किया कि समेशन ऑफ एफ ऑफ, हां बोलिए ना सर. ते x आणि y च्या व्हॅल्यू उलट्या झाल्यात का? कुठं? x इज इक्वल टू समेशन ऑफ m अपॉन समेशन ऑफ f ऑफ y यायला पाहिजे ना, आणि खाली पण. सर हा हा हा, एक मिनिट ना. Summation of m is equal to r into d. नाही तसं नाही यायला पाहिजे, तसंच पाहिजे की रे. Movement at point B if I considered here, इथं मुवमेंट जर कन्सिडर केला मी तुमचा ओके, समेशन ऑफ f ऑफ y इकडे जाणार ना LHS ला. x जर तिथंच ठेवलं तर हा सॉरी करेक्ट यू आर करेक्ट. समेशन ऑफ mb डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f ऑफ y. सॉरी मी जरा कॅल्क्युलेशन करताना चुकलो. Summation of mb movement at point B divided by if I take here, so summation of f of y. This is the correct, and here also it is same. Summation of m at point B divided by summation of f of x. You are correct. So y is equal to this, means I can easily find out x and y value if I will find out the movement. Movement find out करने के बाद ही मैं ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ. So it is your now responsibility to find out the movement now at point B. So write down this formula somewhere. X intercept is the summation of mb divided by summation of f of y, and y intercept is the summation of m divided by summation of f of x. How it is I have shown here. मैंने आपको बताया है कि मैं क्या करूंगा. मेरा फायदा इसमें है कि मैं ये रिजल्टेंट इधर पहले रिजल्ट दोनों को रिजोल्यूशन इधर दिखाऊंगा. So this is the summation of f of y into perpendicular distance x, and second one I will show here. So summation of f of y and summation of f of x. Are you understand? So summation of f of y passes through a point B, then perpendicular distance will be y. आप किसी से भी कैसे भी कर लिया,
तो x is equal to summation of mb divided by summation of f of y आएगा and y is equal to summation of m divided by summation of f of x आएगा. So write it down this and find out the moment first now. So I will draw again this diagram. Okay. So I will say this resultant passes through this, in this way it is passes. So for initial condition, when summation of f of y, if I am going to consider, this will be the perpendicular distance. And when I am going to say, find out y-intercept, this summation of f of x into y. So this is the x and y. Clear? Okay. So write it down this, x is equal to summation of mb divided by summation of f of y, and y is equal to summation of mb divided by summation of f of x. Now find out the moment now. Moment find out करो, B point पे moment find out करना है. This is the one force and this is another force. Transfer this force below this perpendicular distance. For this force, this will be the perpendicular distance. For this force, this will be the perpendicular distance. So find out this now. 1 meter distance दिले त्यांनी, 30 kilonewton चे inclined distance 1 meter दिलेला आहे. So we have required to find out this now. I will erase this. मोठी डायग्राम करतो जरा. Okay. Now, two forces are there. One is a vertical. I will show this force here. And one is the horizontal. I will show this force here. All right. So how much is this force? 30 cos 30. And this is a 30 sin 30. And the distance they have given, this is the 1 meter. And this angle is a 60 degrees. So can you find out this distance and this distance? Find out करू शकता का तुम्ही? हो का, 60 angle दिलाय. कर्ण हा 1 मीटर दिलेला आहे. Hypotenuse is a 1 meter. So can you find out adjacent side x and capital O, small y, this y distance, this and this distance. So 300 cos 30 perpendicular distance will be this. 300 sin 30 perpendicular distance is this. But x they have not given, y they have not directly given. So we are required to find out. So what is the formula? Cos 60 is equal to x divided by 1. And what is the x now? 1 into cos 60. Cos 60 is a 1 by 2, no? 1 by 2. So it is 0.5. Similarly, sin 60 is equal to y by 1. So y is equal to, calculate this value. 3 by 2. 3 by 2 पण किती येते value? Root 3 by 2. नाही नाही पण value किती येते? 0.8 sir. 0.8. हाँ. Correct. Now do the movement. इधर हमको movement find out करना है B पे. So summation of EM at point B is equal to, now check it. This is going to produce anti-clockwise movement. 30 sin 30 is going to produce anti-clockwise movement. So I will write here minus 30 sin 30 into perpendicular distance is a x, it is a 0.5. Then 30 cos, this also going to produce anti-clockwise movement. So minus 30 cos 30 into perpendicular distance. Vertical distance is a 0.8. So 0.8. Clear? Two forces we have completed. So another two forces left now. Total distance is a 6 meter. Out of that 2 meter if I deducted,
So 120, again it is going to produce anti-clockwise, minus 120 into 4, this force. And this force, they have given this distance, vertical distance 3 meters. This is going to produce clockwise movement, so plus 50 into 3. Plus 50 into 3. Now find out the movement now. Now time is over. So you are required to find out summation of M, and then already I have given one formula. From that formula, find out the X and Y. Then find out the value of X and Y. We'll stop here for this lecture today. Lekin in next lecture, you are required to give me 3 values. समेशन ऑफ m की वैल्यू मेरे को आपको बताना पड़ेगा, x की वैल्यू बतानी पड़ेगी एंड y की भी वैल्यू आपको मेरे को नेक्स्ट लेक्चर में बतानी पड़ेगी. क्लियर? यस. Okay, so we'll stop for today's lecture here. निकिता तुम्ही बोला काय, तुमचा आवाज क्लिअर नाही. आवाज नाही हो क्लिअर. हॅलो सर. बोला की. हा हॅलो. हा बोला की. सर टेस्ट झाली आपलं, त्यातलं टेस्ट झाली ना, त्यातलं लास्ट एक्झाम्पल होतं, त्यातलं IXX रॉंग येतं. IXX रॉंग येते. हा, IYY करेक्ट येतं आणि IX रॉंग येतं. ओके, मी क्रॉस चेक करून ते आन्सर तुम्हाला मी टाकतो त्यामध्ये. हॅलो सर सर. ते लास्ट वाला एकदा नेक्स्ट लेक्चरला सॉल्व करून दाखवतो. ते ओके ओके, मी test मध्ये. हा सर, Hello, सॉल्व्ह sir. करून दाखवा. Hello, sir. ओके ओके. हा यस सर. हा ठीक आहे. हा सर, ते IC किती मार्काचं असते? ISC 30 मार्काचे असते. जेवढा सिलेबस ISC 14 तर म्हणजे आपला पेपर कधी तो जोपर्यंत होतोय तेवढा सिलेबस तुमचा ISC ला असेल. ओके सर. सर हे लेक्चर YouTube वर टाका. लगेच टाकतो. हा. ओके, थँक्यू.